Hello students, I hope you all are doing good in your life, right? Very good, excellent, right? So today I'm here to explain two more topics of rational number. How to represent the rational number on the number line and how to insert different rational numbers. There are so many rational numbers which can be inserted between two given rational numbers. Right, I'll explain these topics clearly, then we will be done with this rational number, and then we will turn to the next chapter. We'll move to the next chapter, right? So let me explain how we can represent the fractions or the rational numbers on the number line. You might have drawn number line in your previous classes, right? What is number line? There is a line, there is a center, origin, zero. On the right side we plot the positive numbers, on the left side we represent the negative numbers, right? So all integers, you say whole numbers, rational, natural numbers, you have already plotted on the number line in the junior classes. Now how to plot the fraction, how to plot the rational numbers on the number line, right? So for that I have taken three examples, right? So they are of different types. What is the difference between them? This is positive, right? Here the denominator is greater than numerator. So I've taken one this type. Then second, I've taken the negative rational number. Here also the denominator is greater than the numerator. Here I have taken again the positive rational number, but the numerator is greater than the denominator. So from these three examples, you can clear your doubts. Now see what happens. Here it's 3 by 4. So when you divide a smaller number, like 3 is here and you divide it by 4, you can't divide it. You have to provide a 0 here. There is a decimal there, right? So here accordingly 4 7s are 28. You divide like on. Means I mean to explain that, I mean to say that the answer comes in 0 point something, right? That 0 point something should be clear in your mind, that when the numerator is smaller than the denominator, then the answer that comes in decimals, means 0 point something. So it should lie between 0 and 1, because answer is 0 point something. Something means not greater than 1. It's not 1 point something, 1.7. So it will lie definitely between 0 and 1. Right? Now here, how to decide where it should lie? So it is decided by the denominator. This is the denominator, right? You see denominator is 4. Now what you have to do, this is 0 and this is 1. And now we are sure about that it will lie between 0 and 1. Right. Now divide this portion into 4 parts. 4 parts means whatever there is in the denominator. Numerator का आपको नहीं लेना number, denominator का लेना है to divide that portion into equal parts. 4 equal parts means this, this and this. There are 4 parts. 1 part, 2 part, 3 part and 4 parts. There are 4 parts. I have divided into 4 parts because I had taken denominator 4. Done. Then first one will be 1 by 4. Second will be 2 by 4. 3 by 4. And accordingly 4 by 4. And 4 by 4 you know that is 1. 0 by 4 that is 0. That means 0 and 1 we know. 4 by 4 is 1. So here are the parts. So which is the third, fourth, 3 by 4th part? 3 by 4 is this part. So this one is the answer. Here you have plotted 3 by 4. That, right? So I hope it's very simple, right? Just see the denominator, right? Then divide that portion into parts which is written in the denominator. If it's 5 written in the denominator, divide it into 5 parts. And how to decide whether it's lie between 0 to 1 or 1 to 2 or 2 to 3? That you have to see here. 3 by 4. 3 numerator smaller. So definitely answer will be lying between something 0 and 1. Between 0 and 1. 0 point something. That means 0 and 1. Right? So I hope this one is clear. 3 by 4. I knew that it will lie between 0 and 1, and I have divided into 4 parts because the denominator was 4, and I have divided 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4. So this was the answer, 3 by 4. I hope it's clear. Now next one. Now see which I have taken. Next one is minus 2 by 5. I have taken negative also so that I can plot left side, negative portion. राइट नाउ हियर ऑल्सो इट इज ऑफ द सेम टाइप. इसमें सेम चीज ये है कि दोनों का डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो छोटा नंबर डिवाइड नहीं होता 5 से, तो आप फिर 0 लगाओगे ना बेटा. नाउ सी हियर 0 पॉइंट, तो अब 0 में आएगा आंसर जो भी आएगा. 5 4 20, 0.4. तो 0 आपका क्लियर कहाँ से होता है? अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डेफिनेटली इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. अब वो आपको डिसाइड करना है. वो पॉजिटिव है तो 0 एंड 1 के बीच में,
it is negative, so definitely it will lie between 0 and -1 क्योंकि वो लेफ्ट साइड जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है. नाउ सी हियर, सो नाउ देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? अगेन डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर इज 5. डिवाइड दिस पोर्शन इनटू 5 पार्ट्स. 1 2 3 4. Now see, there are 5 parts. 1 2 3 4 5 equal parts. You can draw it with a scale. Equal parts, right? Now don't draw with a free hand like me. Now here 5 parts आपके हो गए. Now you'll be writing again the same way. 0/5 तो पहला ही होता है. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, right? And this is 5 by sorry, this way. Sorry, just a second, sir. We are moving to the left, so it starts from here, beta. 0/1, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, right? That way. 5/5, right? So if you are moving to the right, start from 0. If you are moving towards here, start from 0. Actually, I was standing that side ना, so वो उल्टा पड़ रहा था. Now here, so this side ये आपको left में डालना है because it's negative, right? And 5 parts में हमने इसको divide कर लिया, वो भी हो गया. After that you have to mark -2/5. ये सब माइनस होंगे क्योंकि इधर नेगेटिव में माइनस ही होंगे ना बेटा. So now here 2/5 -2/5 is this part, this portion. So this here is -2/5. I'll repeat again, right? क्या किया? 2 छोटा था, the numerator is smaller, तो हमें पता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. नेगेटिव है तो राइट को जाएगा नहीं, लेफ्ट को जाएगा क्योंकि 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, राइट? ये भी क्लियर हो गया. अब आपको डिनोमिनेटर देखना है. यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर, दैट इज 5. 5 इज द डिनोमिनेटर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. अब आपने जो लिखना स्टार्ट करना है, अगर आप राइट को लिख रहे हो तो आप 0 से स्टार्ट करोगे. यहाँ भी 0 से. 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. तो ये 2/5 -2/5 आपका मार्क हो गया. सो दिस वे यू हैव प्लॉटेड, ठीक है, दीज रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. It's not difficult, it's very easy. जो मैंने आपको बोला है, just keep those things in mind. पहले आपको देखना है कि पॉजिटिव है, ठीक है, वो राइट पे जाएगा. फिर आपको देखना न्यूमरेटर छोटा है तो 0 पॉइंट आएगा, ठीक है, तो फिर आपका 0 और 1 के बीच में आएगा. ये वाला भी छोटा था, 0 और 1 के. नाउ आई हैव टेकन एन एग्जांपल 5/2. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव, it will be plotted on the right side. I'll stand this side, right? Now it will be plotted on the right side. Okay. Then 5/2. When you divide 5/2, you get something 2.5. 2 point something because 2 2s are 4 होता है. तो ये means 2 से ज़्यादा आंसर आने वाला है. So you have to plot between 2 and 3 क्योंकि 2 point something आएगा क्योंकि 2 2s are 4 हो रहा है. Like see, when you divide this 5 divided by 2 2s are 4. तो 2 तो आ ही रहा है, 2 point something आ जाएगा ना. So that means it lies between 2 and 3. Just a second. I'll rub this. ओके ना, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेक द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? 2. सो यू हैव टू डिवाइड दिस 2 and 3 पोर्शन इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स मतलब एक ही लाइन लगानी पड़ेगी. आपके 2 पोर्शंस हो गए, राइट? अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, दैट इज 5/2, राइट? सो दिस पोर्शन इज 5/2, दैट इज 2.5. दिस वे आपने डिनोमिनेटर से चेक किया कि दैट इट इज 2 देयर एंड वी आर सपोज टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. अगर 5/3 होता हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते. 3 पार्ट्स में डिवाइड करते और फिर अकॉर्डिंगली देखते हैं हमें किसको मार्क करना है. तो दिस इज 5/2. आई होप इट्स क्लियर. इट्स वेरी सिंपल. आई विल रिकॉल द स्टेप्स. फर्स्ट सी द फ्रैक्शन, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया ये पॉजिटिव है और वी हैव टू प्लॉट इट ऑन द राइट साइड. फिर आपको देखना न्यूमरेटर इज स्मॉलर. अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है तो वो 0 पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट? क्योंकि 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट नहीं है, 0 पॉइंट है, तो 0 और 1 के बीच में. देन यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में 5 है तो 0 और 1 को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. डिनोमिनेटर से हम डिविजन करते हैं. जब डिवीजन हो गया फिर उसको स्टार्ट कर दो. 0 की साइड से राइट में जा रहे हैं तो आप 0 की साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाले पार्ट को लिखते हैं हम. जैसे अगर 5 है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 अकॉर्डिंगली. और जो वाला वहाँ पे क्वेश्चन है उसको आप सर्कल कर लो कि दिस इज द पार्ट, राइट? अगर आपका नेगेटिव है यू हैव टू प्लॉट द नंबर लाइन ऑन द लेफ्ट साइड. 0 से आपको लेफ्ट पे जाना है. अब आपको डिसाइड करना है वो 0 और 1 के बीच में होगा, 1 या 2 के बीच में होगा, या 2 और 3 के बीच में होगा. वो आप डिसाइड करोगे. न्यूमरेटर अगर छोटा है तो डेफिनेटली बिटवीन 0 एंड -1. फिर अकॉर्डिंगली अगर 5/2 था तो 2 2s are 4 होता है, 2 से ज़्यादा होगा तो मीन्स इट विल बी प्लॉटेड बिटवीन 2 and 3 क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर. इतना आइडिया तो आप लगा सकते हो डिवाइड करके, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर, राइट? सो ओके चिल्ड्रन,
Now we have completed the topic of how to represent rational numbers on number line, right? Now we have the last topic, how to insert rational numbers, many rational numbers. They can be 3 rational numbers, 4 rational numbers, 5 rational numbers between 2 given rational numbers. There will be 2 given rational numbers and you're supposed to insert like 5 rational numbers between them, inside जो उनके जिसकी value lies between the 2 given rational numbers, right? So we have, for this there are 2 methods. I have already explained to the method, I've already written their name. By finding equivalent rational number is one method, and by finding the mean of 2 rational number is the another method. This method is more easier. You can follow this method, but you should know this method also, right, children? Okay, now see here, I have taken the example, find rational number between minus 5 by 3 and minus 8 by 7, right? So now see what we do by making the equivalent rational numbers. How do we make them equivalent? We have to make the denominators equivalent, right? So that we can compare the numerators, right? Now here, LCM of 3 and 7 is 21. So just let us make it 21. Let us make it 21. 7 3s are, 3 7s are done. Now the next step will be minus 7 5s are 35 upon 21, and here it's 8 3s are 24 and 7 3s are 21. Now you have minus 35 by 21 and here it's minus 24 by 21. So there can be many rational numbers between them. Let us see how many, right? Like minus 34 by 21, right? Minus 33 by 21. So many. From here also you can write down, reduce the number here, right? Like it will come here minus 25 by 21. Here in between 32, 33, 31, 30, 27, 26, like so many. So there are so many, right? Not infinite, but limited number between these 2 rational numbers. So if you are supposed to find 3, just give 3 values. 4, write 4, 5, write 5 rational numbers, right? Like here 30, reduce 34, 33, 32, 31. Put minus also, and so on. Whatever is left you can insert. Suppose you have to insert 20 rational numbers between them, and I am not able to fit 20. I am not able to get 20 rational numbers between these 2 numbers. Now then what we do? Then let me write here 35 by 21 and here it's 24 by 21, right? If I have to write 20, so I can't write 20 rational numbers out of these values, right? So what I have to do, I have to multiply it by 10. So let us do that. Multiply this by 10, multiply this by 10, make a big number. No deal in that, right? No issue. Now, but do the same operation here or there also. So it will be minus 350 by 210 and here it will be 240 by 210. It's very simple to multiply by 10. You just have to put the 0 only. आपको सिर्फ 0 लगानी होती है 10 से multiply करने पे, 100 से multiply करने पे you have to put 100, 2 zeros लगा दो. तो इट्स वेरी सिंपल. अब इसके बीच में आप बहुत सारे लिख सकते हैं, राइट? 350 है, माइनस 349 आपको यहाँ से रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना यहाँ से आएगा 2, राइट? आप इसका नंबर देख लो कौन सा वाला बड़ा है, 241 by 210, so many in between. So accordingly, what is the requirement? What is in the question? How many rational numbers are required between 2 given rational numbers? Then make the decision accordingly. अगर आपको थोड़े से चाहिए 3 rational number, 2 rational number, 4 rational number, 5 rational number, so on, तो आपका काम यहाँ से चल जाता है, बीच में आ जाता है. If you think that you are not able to find out the more rational numbers between them, then multiply it by 10. 10 से मल्टीप्लाई करने पे इजी हो जाता है. अगर आप सीधा कुछ और क्वेश्चन है आपके पास, माइनस 5 by 3 था क्वेश्चन और 8 by 7 था, राइट? First you make the LCM same, then you multiply by 10, 100 and whatever, and you will get so many rational numbers between 2 given rational numbers. I hope this one is clear. This method is clear. I'll repeat again. By finding the equivalent rational numbers. Equivalent means you have to make the denominators equal. जब आपके denominators equal हो जाते हैं तो आपके ऊपर वाली values जो है आप उनके बीच में you can write out the numbers because the denominator will be same for all the numbers, right? So this is the method of equivalent, right? Now I will explain the another method, which is the method of to find the mean, and this is difficult one. So if you have the choice, then just choose this method.
If you don't have a choice, it's written in the question by the method of mean, find out rational numbers, then you don't have a choice, you have to do this. So you should know this method also, how to find the mean. mean means अगर मेरे पास 5 है, अगर मेरे पास 10 है, mean means 5 plus 10 15 divided by 2, उन दोनों को ऐड करो, उसके 2 से डिवाइड करो, वो उसका मिडल वैल्यू देगा आपको. 15 divided by 2, that is 7.5. तो that means the mean, the middle value. So यहाँ फ्रैक्शन है, राइट. फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, मीन कैसे आएगा, इसके बीच का नंबर कैसे आएगा. दैट मीन इज एड द टू नंबर्स, डिवाइड बाय 2. जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज 5 है मेरे पास नंबर, आई हैव 5 and 10 एंड आई वांट टू फाइंड द मीन. मीन मीन्स आप उसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 15/2 जो कि 7.5 इसके बीच का नंबर होगा. अगर आपको बोलते हैं 5 और 10 के बीच का नंबर निकालो, so that is the mean, finding out the mid value between the two numbers. We add them, divide by 2. So I have added them and divide by 2. I have to add them by that taking out the LCM and all, right? So here I do. If it's a whole number, then it's no. We don't have a problem in integer whole numbers and all. So चलो यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा 4, right? I hope you know how to find the LCM, right? So 4 LCM आगे इसको आप 4 बनाओगे, यहाँ आएगा 2, 2 1s are 2. Here it will be 3. तो नीचे तो 2 है ही आपके पास, राइट. सो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 to 5, 5/4 एंड डिवाइड बाय 2. सो हियर 5/4 जो नीचे का डिवाइड है ना, उसको आप यहाँ लिख दो, डिवाइड बाय 2. सो दैट मीन्स 5/4 डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई, राइट, एंड इट बिकम्स 1/2, क्योंकि वो डिवाइड में था. डिवाइड 2 मीन्स व्हेन यू चेंज टू मल्टीप्लिकेशन, उसको रेसिप्रोकल करते हैं हम. इसके नीचे 1 था, 1 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे आ जाता है. आई होप यू नो दिस थिंग, राइट. Now here if it is possible to cancel, but here it's not. 5 1s are. अगर आपकी कटिंग नहीं होती है आगे, तो then you have to multiply numerator with the numerator, denominator with the denominator. आपका आंसर आ जाएगा 5 1s are 5, 4 2s are 8. ये वाला जो नंबर है, ये लाई करता है, it lies between this. This is a rational number between these two numbers. अब ये तो हमने 8 निकाला है. First, before rubbing this, चलो मैं रब नहीं करती, ये वाला क्वेश्चन रब करती हूँ. Okay. If you still have a doubt, I'll repeat this process again. By finding the mean, mean होता है adding two numbers and dividing by 2, it gives the mean. Mean is the middle value, right? So वहाँ fraction है, fraction को आप add करेंगे, divide by 2. How we add the fraction? By taking out the LCM. The same method, you apply that method and just add them and find out. There was 2 in the denominator. उसको आप पहले, ये fraction में है, उसको division में लिख दो. Afterwards, divide changes to multiply, उसको उल्टा कर दो, and this find out the whatever it's the answer in the simplest form. Simplest form means you have to cancel out if there are some common factors, right? I hope it's clear, right? अब क्या करना है हमने? We have found one rational number between them. लेकिन हमें तो बोला find out 3, तो वो 3 कहाँ से आएंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के बीच में we'll find out mean. We'll find out mean. Mean का प्रोसेस क्या है? जैसे ये वाला प्रोसेस है, दैट इज द सेम. ये मीन जैसे किया वैसे ये करेंगे. इन दोनों के बीच में ये आया, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अगेन वही करो, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2. इसका आंसर ऐसे निकालो जैसे यू हैव फाउंड, वी फाउंड हियर द सेम वे. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व हियर नाउ. अगर आपको इसके बीच का चाहिए, 5/8 and just add these two fractions and divide by 2. Same process, take the LCM. Okay, I'll complete, I'll find out for you. Here it's 8, let us make it 8, 4. तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5/8, और नीचे 2 था, उसको मैं मल्टीप्लाई पहले कर लेती हूँ, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाता है, राइट. हियर इट्स 9/8, 1/2. कट कैंसलिंग नॉट पॉसिबल. 9 1s are 9, 8 2s are 16. तो इसके बीच का जो होगा दैट इज 9/16. आई होप इट्स क्लियर. आप बहुत सारे मीन्स निकाल सकते हो, क्योंकि सब नंबर्स के बीच में आपके पास मीन्स होंगे. मीन्स इन 2 को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये आ गया. इन दोनों नंबर्स को यू जस्ट ऐड देम, यू जस्ट डिवाइड बाय 2, यू विल गेट दिस नंबर. अगेन हियर अगर इसके बीच का चाहिए, यू वांट नंबर बिटवीन देम, जस्ट ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2. इट्स सो सिंपल, राइट. आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो हियर लेट अस सॉल्व दिस वन आल्सो. एलसीएम विल बी 8, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3 2 6, वहाँ नीचे 8, और इसको उल्टा कर देते, राइट. 11 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, then we got this thing, and it's not possible to cancel out, right? Divide नहीं होता, कोई common factor नहीं है. 11 1s are 11, 8 2s are 16. Here it will be 11/16. I have found 3 rational numbers between these two given rational numbers. कैसे? Adding to dividing by 2, adding to divide by 2, add to divide by 2.
Now further we can find out the rational numbers between these two. Add them, divide by 2. 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 There will be so many rational numbers and between them also. So I hope this method is also clear. But it is little lengthy, and possibilities of mistakes is more in this method rather than on the previous method, right? So there are two methods. I'll just repeat again. First, how to insert the rational numbers between two given rational numbers. First method is by equivalent method. Equivalent method, make the denominator same, taking the LCM, denominator same हो गया. ऊपर के आप देख लो, just find out अगर आपको उनके दो के नंबर्स के बीच में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, तो वेल एंड गुड. अगर आपको लगता है उसके बीच में उतने रैशनल नंबर्स नहीं हैं जितने क्वेश्चन में पूछे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 10. ऊपर 10 नीचे 10, इधर भी ऊपर 10 नीचे 10, वो बड़ा नंबर हो जाएगा, चाहे लाइक 210, 310. उसके बीच में आपको you'll be able to find the numbers which is asked in the question. आपको 10 पूछे 20, you can write. ये एक फर्स्ट मेथड था. सेकेंड मेथड इज बाय फाइंडिंग द मीन. मीन मीन्स द मिडल वैल्यू. अगर आप दो नंबर्स का मीन चाहते हैं 10 and 20, तो what I'll do, I'll add 10 and 20, 30 divided by 2, that is 15. और 15 ही is the middle value between 10 and 20. So this is a way to find the middle value. So आप क्या करेंगे, आपके पास फ्रैक्शन है 1/3, 3/6, whatever. Take out, first make the LCM. अच्छा, no need to make the LCM same. You have to find the middle value. Just add them, divide by 2. जब आप add करेंगे फ्रैक्शन, ऑटोमेटिकली you'll take the LCM. उससे ही आप सॉल्व करोगे उसको. Just solve, just add them, add two fractions, add two rational numbers, divide by 2. Divide means divide changes to multiply. उसको उल्टा कर दो नंबर नीचे. अगर 2 है नीचे तो multiply by 1/2. कटिंग कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एंड you'll get the answer. So आपके दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो बीच का रैशनल नंबर है और फर्स्ट वाला, उन दोनों के बीच में भी वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एडिंग देम, डिवाइडिंग बाय 2. फिर उधर के बीच में भी एक आ जाएगा. सेकेंड और थर्ड के बीच में भी you'll be doing the same process, same method, right? Same calculation, adding 2, divide by 2. वहां भी एक आ जाएगा. जब 3 बीच में आ गए, उसके बीच में और आप निकाल सकते हो by the same method, adding, dividing by 2, adding them, dividing by 2. उसके बीच में you are able to find infinite. There are so many rational numbers between two given rational numbers. So I hope this topic is also clear, right? How to insert the rational numbers between two given rational numbers. I hope it's clear. How to plot the number line. I hope it's clear. What are the properties of rational number, right? All the topics are clear. So now I'm done with this chapter, rational number. Still you have the queries, do let me know in the comment section. I'll try to explain again. I'll make another video of different questions. Just tell me the questions, right? So now we'll switch to the next chapter, which is linear equations in one variable, right? It's one variable in class 8th and 9th. Then in the 10th, there becomes two variables, right? So I'm just ending this chapter here. So we'll meet again in the next video.